Hello, you guys. I guess everyone is keeping their safe in this COVID-19 turbulence. And I'm here to talk about the various opportunities agriculture has to offer in India, apart from the mainstream career opportunities, which you guys already might be knowing. So I assume that I'm talking to the agricultural fraternity or the students of agricultural background, but let me tell you that this video is equally opportunistic for the non-agri background people as well. So let's begin. Hello, I'm Sonal Chaurasia and I am a business development executive in Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, RKVY Raftar, Agribusiness Incubator. So why one should opt for agripreneurship or agri-entrepreneurship? As you can see, the market growth is commendable. It's around 15 to 25% annually. Every one of us are agricultural consumers, right? So the demand is ever increasing. The demand of organic and quality foods, it's always there in India and in abroad. Secondly, industry academia marriage is a must. A lot of research work is going on. We are piling up theses. But what is the use of a research which cannot be commercialized? So there is a huge tech adoption gap in agricultural operations, processing, etc. For instance, the rice which we eat, that is transplanted by women bending in very awkward postures, millions and millions of them in the paddy season, with the feet soaked in water. That develops fungus and it pains because the other insects also bite at the same point of fungus. And this is a very, very startling fact that every year more than 70% paddy is transplanted manually. So where has the research gone? We know a lot of machineries, right? We know a lot of transplanters. I think the agricultural engineering students can relate. We learn about various models, where it can work, on what type of soil it can work. So we are seriously lacking somewhere. So here is the point where an entrepreneur intervenes. An entrepreneur is a change maker who really impacts, or who really brings an impact in the grassroots level. So thirdly, it can be for a greater good. It is for a greater good because right now you're a job seeker. You can be a job creator. You can work for the farmers, you can work with the farmers and make agriculture a better contributor in the GDP so that every one of us can evolve as agriculture fraternity. So how to come up with an agribusiness idea? First, you need to identify the pain points, the problem points. आपको ये पता करना है कि problem कहाँ पर हो रही है. And then you need to list down your target customer, whom you want to serve. You can have a farmer as your customer. You can have a normal household or a housewife or a hosteler or kids as your customer. So you need to jot that down. You have to list that down and you need to see the overlap. You need to find the overlap of the problem statement and the target customer list. And there is the point where your opportunity lies. आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये लिंक दे दिया है. इसमें एग्रीकल्चर चैलेंजेस है जो कि स्टार्टअप इंडिया ने लिस्ट डाउन किए हैं. सो यू कैन टेक सम ऑफ योर रेफरेंस फ्रॉम देयर एज वेल. और ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद कि प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है और आपका टारगेट कस्टमर क्या है, यू नीड टू गिव अ सोल्यूशन. आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द ओवरलैप लाइज. आपको इसके बाद यू नीड टू थिंक ऑफ एन इनोवेटिव आइडिया विच कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड फाइनली यू नीड टू इवैल्यूएट योर आइडिया. आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से जाके बात करनी है, उनको बताना है कि व्हाट इफ यू गेट सच अ सोल्यूशन. If your potential customer is equally excited about your idea, then there it is. So let me explain this with some examples. These are the examples of some of the startups of IGKV Rabi, that is our incubator. पहला एग्जाम्पल है W2W, वेस्ट टू वेल्थ इस कंपनी का नाम है. और ये स्टार्टअप इट इज़ रन बाय अ 52-year old लेडी. इन्होंने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन बनाई है और दीज आर मेड आउट ऑफ पैडी स्ट्रॉ. पैडी स्ट्रॉ से इन्होंने सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट किया है और उससे ये सैनिटरी पैड्स इन्होंने बनाया है. राइट नाउ इनका जो प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग स्टेज पे है. इट इज़ सेंट टू सिरकॉट मुंबई ताकि इनके प्रोडक्ट का वैलिडेशन हो सके. जब ये हमारे इंक्यूबेटर में आई थी तब इनके पास सिर्फ एक बिजनेस आइडिया था. इनको पता नहीं था कि ये कैसे होगा या फिर ये कैसे बनेगा. शी जस्ट हैड दिस
फीलिंग कि शी रियली रियली वांट्स टू वर्क फॉर द रूरल वुमेन, और वो उनको अवेयर करने के लिए और मेंस्ट्रुअल पेन से निजात दिलाने के लिए वो कुछ काम करना चाहती हैं. Eventually, she got successful in this product development. Incubator में उनको कई प्रकार का business और mentoring support मिला, जिसकी वजह से वो ये product बना पाई. I assume that all of you must be knowing what is an incubator. I'm talking about business incubators. Incubator is a kind of innovation cluster where startups are provided with tools, executive mentorship, and operational support to launch themselves and to scale. वहाँ पर उनको ऑफिस स्पेस मिलता है, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपने जो साथ वाले स्टार्टअप्स होते हैं उनके साथ उनको क्रॉस लर्निंग मिलती है, साथ ही साथ नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिलता है. To be short, the launching and operating cost of a startup is reduced by 40 to 50% if it gets incubated. सेकेंड केस पे हम आते हैं, ई किचन. इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टूडेंट. आई विल टेक इट लेटर. थर्ड केस पे आते हैं विच इज़ ऑफ रामांजलि ऑर्गेनिक्स. दिस स्टार्टअप इज ओन्ड बाय अ 24-year-old बॉय. इन्होंने एक इंटीग्रेटेड शेड बनाया है जिसमें नीचे की तरफ वर्मी कॉम्पोस्ट है और ये इस तरीके से स्लैंटेड है कि यहाँ से वर्मी वॉश भी कलेक्ट होता है. साइड में यहाँ पे नार वाली सब्जियां लगी हुई हैं. दीज आर क्रीपर्स, और इनकी वजह से अंदर एक ऐसा फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनता है विच इज़ वेरी फेवरेबल फॉर ग्रोइंग ऑयस्टर मशरूम. तो यू आर गेटिंग 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल शेड, एक्चुअली 6, क्योंकि छठवा है द अर्थवर्म्स. द अर्थवर्म्स आर ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, राइट. फोर्थ केस पे हम आते हैं विच इज़ द स्टोरी ऑफ आदित्य बायो इनोवेशन. इन्होंने एक रेंज बनाई है नैनो फर्टिलाइजर्स की. ये नैनो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स की और लेबरर्स की ड्रजरी को कम करते हैं. यू माइट हैव सीन फार्मर्स कैरिंग ह्यूज लोड्स ऑफ किलोज ऑफ यूरिया की बोरियां वो लोग अपने कंधों पे उठा के अपने फार्म में यहाँ से वहाँ जाते हैं. उसकी जगह बस ये एक छोटी सी बॉटल दे कैन कैरी इट इन देयर पॉकेट्स. In 100 liters of water, only 10 ml of this nano fertilizer is required. अभी recently इफ्को ने भी ऐसा ही कोई product launch किया है, but this company already has the patent, actually international patent for this product. Let's get back to the second story. eKitchen is an online platform for fruits and veggies. This startup is owned by a MSc first year student. And they leased a land at a very nominal rate. एक nearby village में उन्होंने lease पे एक ज़मीन ली and they started growing and the harvest came out really well. And then they started selling it through WhatsApp messages and text messages. That's when they got incubated with us. Meanwhile, they also started to develop a dense network of farmers from the nearby villages. This is their application, which is designed by a fellow tech student. In the first month itself, they generated a revenue of around 80,000 rupees. And this is how their interface looks like. यहाँ पर वो लोग ने मार्केट प्राइस से भी अपने प्राइस को कंपेयर किया है, which is a very good feature. And since they have a network of organic farmers, तो organic producers जो होते हैं उनके साथ ये certificates भी display करते हैं. That makes the platform very reliable. And recently they have bought this e-rickshaw for the free delivery of their commodities. हॉस्टल कैंपस में सभी की बाइक्स खड़ी रहती हैं और इनका ये ई रिक्शा खड़ा रहता है. सो दैट गिव्स अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ व्यू. आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं एग्री मार्केट में. दीज आर सम ऑफ द स्टार्टअप इनेबलर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्टार्टअप इंडिया. ऑफ कोर्स आप इनके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल यदि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है. सेकेंडली इट इज़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो हमारा इंक्यूबेटर है. इट इज़ ऑफ RKVY रफ्तार स्कीम. देन देर आर अटल इनोवेशन मिशंस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज व्हाट इज़ एन इंक्यूबेटर. इन सभी संस्थानों के इंक्यूबेटर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं. देन बायरैक का एक फ्लैगशिप
program है which is BIG, big biotech ignition grant. Basically it is for biotech startups, but इनका एक vertical agriculture भी है, so they are funding them as well. Maximum 50 lakhs तक की funding होती है इसमें, but it is not really a grant, because if you get successful as a startup, then you need to return that back. And if somehow your idea doesn't work out, then it is non-payable. NABARD की एक scheme है which is ACABC. It stands for Agri Clinics and Agri Business Centers. इसमें 45 days की training होती है which is fully sponsored by the government, and it is residential training. इसके तहत आपको 20 lakhs तक का grant मिल सकता है, and for exceptionally good cases you can get a grant of up to 25 lakhs. And if it is a group project, यदि आपके ग्रुप में 5 लोग या उससे ज़्यादा हैं, minimum needed is 5, तो आपको 100 lakhs तक की funding मिल सकती है, along with complete hand holding, and that too with a very nominal interest rate, along with subsidies. The range of subsidies is from 36 to 44%. And for more information, you can log on to agriclinics.net. So we have known how to come up with an idea. हमने ये भी देखा कि किस तरह के आइडियाज़ सेलेक्ट हो रहे हैं incubators में. But we should also consider the second phase of the coin. What if the idea fails? Let's consider the worst case scenario as well. All of us know Unacademy, right? Unacademy is presently a $500 million company, but initially it started as a YouTube channel. The company has to pivot its business model 4 times. So do pivot, that is, do a essential strategic business shift, which is FYI, one of the fundamental concepts of lean startup methodology. यदि pivoting भी काम ना आए, which won't happen if you do it right, then too, the experience of being a founder or a co-founder in a failed company is much more valuable than that of a regular employee in some other company. With an experience of say 2 to 3 years, you can fetch a job in an incubator. And the managerial professionals in incubator in India draw salary ranging from 80,000 to 1.25 lakhs per month. So that is the worst you can get. Just imagine, what if it doesn't fail? What if your idea works? The plethora of problems you get to solve, the potential impact you get to make. See, I know initially all of us want materialistic goals to achieve in life, but after a point, you need to find the purpose of your life. And entrepreneurship makes you realize that it evolves you as a person. So that's enough of philosophy. If you really are passionate and have the fire in your belly, then this is the very right time, because there is so much money flowing in the startup ecosystem. This is one of the best incubators of the world. You can access various courses from the website, which will help you innovate and brainstorm in your segment. So, economy of India, it is going to take a huge shift, especially due to this COVID-19 situation. And India will need world-class talents. A very well-known economist, Steve H. Hanke, says that entrepreneurship in agriculture can bring a massive revolution in India. And as a country, we have an image of a consumer. We are consuming things from various other countries. We are not producing much. So after this COVID, India has now a bigger market to cater, because the global firms and the world's gaze will shift from China to India. I think this is a very good opportunity. Right now, we are open for applications. The first program on your left-hand side is, if you have an agribusiness idea which is innovative, then you can apply for this program, which is Abhinav. And you can get a grant in aid up to 5 lakhs. ये grant है, this is not a loan. इसको आपको वापस नहीं करना है. And if you are really interested and you really have an innovative idea, then you can apply, you can scan the QR code,
And then we have the second program. It is for a bit matured startups in agribusiness, and the grant in aid amounts up to 25 lakhs. दोनों ही कंडीशंस में स्टार्टअप के सिलेक्शन के बाद उनको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. अभिनव के केस में 10,000 रुपी पर मंथ का स्टाइपेंड भी होता है उस 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान. द ट्रेनिंग इज रेसिडेंशियल, मगर आई थिंक ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट रेसिडेंशियल. यू विल हैव टू अटेंड इट ऑनलाइन इफ यू गेट सेलेक्टेड. तो ऑनलाइन होगी देन आई थिंक यू वोंट गेट द स्टाइपेंड of 10,000 rupees a month, but the grant is there. इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 2 हैं. पहला ये कि योर आइडिया शुड बी इनोवेटिव एंड इट शुड बी इन एग्री बिजनेस, राइट. सेकेंड क्राइटेरिया इज अ बिट टिपिकल. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ और इट्स नेबरिंग स्टेट्स विच आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश. और यदि इन दोनों में से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नहीं मीट कर रहे हैं, सो वी हैव द थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज दैट योर फर्म शुड बी रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ और इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़. सो यू नीड टू मीट एनी ऑफ दीज 3 criteria. So the last date is 31st May 2020. You can scan the QR code. This is the website of our incubator. So if you want to see the selected startups which were selected last year, so you can just scroll down. See, the application links are right here. And scroll to the very bottom, and here you can find the publications. In these you will get all the ideas which got selected. So that will give you some idea. I would like to heartfully thank scientist agronomist IARI Dr. Bipin Kumar for giving me such a credible platform and a lovely audience. Hope you guys found this information useful. Thank you so much for your time, guys. Thanks for watching.